Hello everyone, continue with the same exercise 12.1 Heron's formula. Today we will be doing question number 4, 5 and 6. Question number 1, 2, 3 we have already done in previous module. Now question number 4 is find the area of triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter. Here we have two sides of the triangle, 18 centimeter and 10 centimeter. Means A we have and B we have, but C we don't have. And perimeter of the triangle is 42 centimeter. So first of all, we are writing A equals to 18 centimeter. Let A equals to 18 centimeter, B equals to 10 centimeter and C equals to question mark. Now perimeter of the triangle equals to 42 centimeter. It is given. Now what is perimeter of the triangle? Sum of all the sides. Sum of all the sides means A plus B plus C. Three sides we have, तीनों को add कर दिया, equals to 42 centimeter. Now put the values in this. 18 centimeter plus 10 centimeter plus C equals to 42 centimeter. Now 18 plus 10, 28 and 28, when we will take it there, the 42 minus 28. I am doing here. 18 plus 10, 28 centimeter plus C equals to 42 centimeter. So C equals to 42 centimeter minus 28 centimeter. Then C equals to 12 minus 8, 4 and 3, 14 centimeter. So our third side of the triangle is 14 centimeter. So C equals to 14 centimeter. Now what we will do? Heron's formula, we have to find the area of triangle. So we have to use Heron's formula. And before using Heron's formula, first we will find S. S, that is semi perimeter. Semi perimeter means क्या होता है? Perimeter का half. S equals to, we can write perimeter upon 2, perimeter upon 2, or S equals to A plus B plus C upon 2. दोनों में से हम कोई सा भी फॉर्मूला पुट कर सकते हैं. If we have perimeter, we can use perimeter upon 2. अगर perimeter नहीं है और अगर है भी और आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, you can use A plus B plus C upon 2. The answer will be same. Perimeter, our perimeter is 42 upon 2. So S equals to 21 centimeter. Now put the values in Heron's formula. What is Heron's formula? Area of triangle equals to under root S into S minus A into S minus B into S minus C. Then put the values and solve it. S we have 21, S minus A 21 minus 18, S minus B 21 minus 10 and S minus C 21 minus 14. Then solve it. 21 will remain same and multiply by 21 minus 18 is 3. Then multiply 21 minus 10 is 11 into 21 minus 14, 7. Now again I am saying don't multiply these things, just do the prime factorization. 21, 3 into 7. When you will do the prime factorization, you will get 3 into 7. Into this 3 will remain same. ये वाला 3 आपका same रहेगा. 21 के prime factors will 3 into 7. Then this 3, then 11. 3 is already prime number, 11 is already prime number and 7 is already prime number. ये same हो गया. Now make the pairs. This 3 and this 3, 2 time we have. Square root के बाहर आते ही 1 time हो जाएगा. Then this 7 and this 7, तो ये 7 हो जाएगा and under root 11. Because 11 is single, so this will be in the square root only. So 3 into 7 root 11. So 3 into 7, 3 7 is 21 root 11 square centimeter.
This is our answer. Area of triangle equals to 21√11 square centimeter. Simple. So when we have perimeter and two sides, just find the third side and use Heron formula. Now question number 5 is, sides of triangle are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. Same thing, area find करना है ट्राइंगल का, तो you will use Heron's formula, but the sides are in the ratio of 12:17:25. साइड्स जो है वो सेंटीमीटर या मीटर में गिवन नहीं है, मतलब हमको साइड्स का मेजर गिवन नहीं है, साइड्स का रेशियो गिवन है. तो फर्स्ट तो वी हैव टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ द साइड्स. तो लेट A equals to 12x, B equals to 17x and C equals to 25x. क्योंकि रेशियो गिवन है और हमको उसका मेजर फाइंड करना है. एंड पेरीमीटर इज गिवन 540 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल equals to 540 centimeter. Now put the values in this. 12x plus 17x plus 25x equals to 540 centimeter. Now then 12x plus 17x plus 25x, that will be 54x equals to 540. Then x equals to 540 upon 54. So the value of x will be 10. Now we have x equals to 10, so we have to put this value in A, B and C. 12 into 10, 120 centimeter. 17 into 10, 170 centimeter. And 25 into 10, 250 centimeter. So that these will be our sides of the triangle. Now so A जो कि हमारा कितना था 12x equals to 12 into 10, 120 centimeter. B आपका था 17x, 17 into 10, 170 centimeter. And C 25x, 25 into 10 equals to 250 centimeter. Now we have A, B and C. अब ये जो सेंटीमीटर में मेजर्स आ गया साइड का, these we will use. Now S equals to, you can use A plus B plus C upon 2 also or perimeter upon 2 also. So perimeter, your perimeter is 540 upon 2. Cancel it. 2 2s are 4, 7, 270. S equals to 270 centimeter. तो जो हमारा सेमी पेरीमीटर है that is 270 centimeter. Now write the Heron's formula. Area of triangle equals to under root S into S minus A into S minus B into S minus C. And put the values in this and solve it. Simple. 270 and S minus A 270 minus 120. Then S minus B 270 minus 170. A is 120. 270 minus 120, then 270 minus 170, and S minus C 270 minus 250. Now then 270 will remain same. Multiply 270 minus 120, 0, 7 minus 2, 5, 2 minus 1, 150. 270 minus 170, 100. Into 270 minus 250, that will be 20. अब या तो आप 270 के प्राइम फैक्टर्स करो, 150 के करो, 100 के करो और 20 के करो, देन मेक द पेयर. अदरवाइज इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं वर्बली. 270 है तो 270 में से 0 को अगर हम रिमूव करेंगे तो क्या होगा, 27 बचेंगे. तो 27 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 into 3 into 3. तो 3 into 3 into 3 ये आपका 27 हो गया और मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 270 हो जाएगा.
या तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, अदरवाइज अगर हम यहाँ 3 के आगे 0 लगा देंगे 30, 3 3 9 और 9 3 27 और 30 से किया तो 270 आ जाएगा। देन 150 के सेम 0 को रिमूव कर दो, क्या नंबर बचेगा 15। 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं 3 into 5, तो आप लिख सकते हो 3 into 5 को क्या लिख सकते हो, या तो 3 into 50 और या फिर 30 into 5। तो आई एम राइटिंग 30 into 5, क्योंकि यहाँ 30 ऑलरेडी भी है तो 30 का पेयर बन जाएगा, तो 30 into 5। देन 100, अब 100 में क्या करोगे आप, 100 में 0 रिमूव कर दोगे तो क्या बचेगा 10, 2 5 10, तो या तो 20 into 5 और या 50 into 2 कुछ भी कर सकते हैं। तो आई एम राइटिंग 20 into 5, क्योंकि 20 यहाँ पे है हमारे पास में, और into 20 सेम। तो 270 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 into 3 into 30। 150 के फैक्टर्स हो गए 30 into 5। देन 100 के फैक्टर्स हो गए 20 into 5 और ये वाला 20 सेम रहा। इफ यू कैन डू लाइक दैट यू कैन डू दिस, अदरवाइज 270 के प्राइम फैक्टर्स अलग से करिए, 150 के प्राइम फैक्टर्स यू हैव टू डू, देन 100 के प्राइम फैक्टर्स, देन 20 के प्राइम फैक्टर्स, और जो भी नंबर्स आते हैं you will write in the square root and make the pairs and solve it. The answer will be same. Now here make the pairs. 3 का pair already we have, 30 का pair we have, then 21 and 22, 2 times 20 हो गया and 2 times 5 हो गया, मीन्स सारे ही नंबर बाहर आ गए स्क्वायर रूट से। So what we will write, 3 into 30 into 5 into 20, single time हो गया। Now multiply these numbers, you will get 9000 square centimeter. So the area of triangle is 9000 square centimeter. This is your answer. बस आपको यहाँ से प्रॉपरली करना है कि स्क्वायर रूट में या तो प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, या अगर आप फैक्टर्स वर्बल कर सकते हैं तो यू कैन डू लाइक दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आपके पास में आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसकी ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, ये 12 और ये 12, और पेरीमीटर जो है वो आपका है 30 सेंटीमीटर। Now third side we don't have. This question is same as question number 4. कि आपके पास में third side नहीं थी, first you have to find out the third side and then use Heron's formula. So how we will find? Let A equals to 12 centimeter, B equals to 12 centimeter and C equals to question mark. Perimeter of triangle equals to 30 centimeter. Now perimeter of triangle means same sum of all the sides, means A plus B plus C equals to 30 centimeter. Now put the values in this. A is 12 centimeter plus 12 centimeter plus C we have to find out, equals to 30 centimeter. Now then 12 plus 12, 24. 24 centimeter plus C equals to 30 centimeter. Then C equals to 30 minus 24. 30 minus 24 is 6 centimeter. तो C आपका क्या आ गया 6 centimeter आ गया। Then find S. S means semi perimeter. Semi perimeter मतलब perimeter का half. Perimeter का half. तो S equals to perimeter upon 2. और यू कैन राइट A plus B plus C upon 2. दोनों में से एनी वन फॉर्मूला यू कैन यूज। तो पेरीमीटर वी हैव 30 upon 2, तो ये क्या आ गया आपका सेमी पेरीमीटर 15। S equals to 15 centimeter, small s. Then area of triangle under root S into S minus A into S minus B into S minus C. Then put the values in this and solve it. S हमारा कितना है 15 into S minus A, 15 minus
15 minus 12. S minus B, 15 minus 12. And S minus C, 15 minus 6. हमारा C आया था 6. Then solve it. Under root 15 into 15 minus 12, 3. Then 15 minus 12, 3. 15 minus 6, 9. Now multiply नहीं करना है. Again remember this thing. 15 के prime factors 3 into 5. Then ये 3 and ये 3 will be same. 3 into 3. Then prime factors of 9. 3 into 3. Now make the pairs and take out the numbers from the square root. 3 how many times? 1 time, 2 time, 3 time, 4 time and 5 time. So ये जो fifth वाला है, this will be remain inside only. So 1 time, 1 pair, this one and this one. So 3 into 3 we can write. Now 5 का कोई pair नहीं है और इस 3 का कोई pair नहीं है. Means अंदर बचेगा आपका 5 into 3. 9 root 15 square centimeter. So your area of isosceles triangle will be 9 root 15 square centimeter. Now this exercise is completed. In the next module we will do exercise 12.2 and do these sums in your copy. Thank you.